Azad Maidan has been the central venue for most Mumbai cricketing stories. The ground has become synonymous with the city's cricket scene thanks to all the stalwarts over the years who have had to answer its many challenging questions before making it big. This is the story of a player who not only aced the Azad Maidan's on-pitch challenges but also had to survive growing up on its fringes. TECNO Sparks and Universe Make It Big presents the story of Yashasvi Jaiswal. Yashasvi's journey was almost entirely molded in Mumbai, but the seeds were first planted when he was growing up near Suryavan in Uttar Pradesh. His father Bhupendra Singh Jaiswal owned a hardware store in the district, but was also known to be one of the top cricketers there. He made sure to pass on his cricketing wisdom to his two sons. Yashasvi, the younger of them, grew obsessed with the sport and Bhupendra put it to good use. उसका ये जो दिमाग और उसकी आई मैंने तेज बचपन से किया, क्योंकि मुझ में वो गुण था। मैं जानता था कि आई इसका तेज करो, तो प्लास्टिक की गेंद से मैं अंधेरे में उसको खिलाता था, यहीं बंद करके एक बत्ती जलाता था, तो उसको वैसे से प्रैक्टिस केवल ड्रिलिंग के बस सिखाता था। तो रात में उठता था, पापा चलो प्रैक्टिस कराओ, तो यहीं बैठ जाता था, यही थोड़े दोनों बच्चों को ऐसे दोनों हाथ से बाल फेंक के खिलाता था। While this relationship was the reason his love for cricket began, Yashasvi was already ambitious beyond his age at 11. He had known where Sachin Tendulkar had made his mark, and after a trip with his father to Mumbai, he refused to return. मैं बचपन से एक ही चीज़ सोचता था कि मुझे खेलना है क्रिकेट, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे कहीं भी सोना पड़े, कैसे भी रहना पड़े। और मैं सबसे अच्छा सर मैं चाहता था कि मैं मुंबई से खेलूँ, क्योंकि सचिन सर भी मुंबई से खेलते थे और मुंबई का क्रिकेट बहुत सर बहुत माना जाता है कि यहाँ पे डेज क्रिकेट बहुत अच्छा है। अंडर 14, 16 इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करने मिलती है, आगे जाने के लिए बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं सोचता ही था कि मुझे जाना है, मुंबई खेलना है। मैं वहाँ भी खेलता था, पर वहाँ के जो भैया लोग थे वो बोलते थे कि मोंटी इधर मत खेल, इधर तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तू जा, बाहर निकल। मैं जब छोटा था तब वो बोलते थे हमेशा। While it's a determination that warms the heart in hindsight, it was a devastating blow to Yashasvi's parents, who knew they were fighting a losing battle. They didn't have the means to support him or the heart to force him back home, which meant a difficult life was ahead for a boy who had yet to hit his teens. An uncle in Mumbai took him in, but had a small house himself. He helped find Yashasvi housing at a dairy where he would have to work in return. But the rigors of both playing and working at such a young age got too much, and one day he was told not to return. Yashasvi didn't tell anyone back home for fear of being called back. A groundsman at Azad Maidan took him into his humble home, a tent at Azad Maidan. When his parents did find out, Yashasvi would soothe his anxious mother on the phone by telling her it was good fortune that he got to live where he played. But his cricket itself was suffering, with occasional flashes of brilliance not enough for a boy of his background in the Mumbai machinery. That was until Jwala Singh entered his life. टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा था कि जब मुझे ज्वाला सर मिले, तभी ऐसा सिचुएशन हो गया था, मैं थक गया था एकदम। फिर मैं बोला कि अब बहुत मुश्किल है, लग रहा है अब मेरा कुछ होगा नहीं, अब लग रहा है मम्मी पापा की बात मान ही लेता हूँ, चला जाता हूँ। तो ऐसे ही सोच रहा था कुछ दिन। फिर अलग बैठ के एक दिन रात को बहुत रो रहा था, बोला अब क्या होगा, भगवान कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए। मुझे अभी भी याद है, मैं मुस्लिम यूनाइटेड के बीच विकेट पे गया और ऊपर ऐसे भगवान को देख के बोला, भगवान कुछ कर दो यार, चमत्कार अच्छा कर दो। वो दिन मैं अपने दिल से बोला था, यार भगवान कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, भगवान बहुत प्रॉब्लम हो रही, कुछ हो जाए। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन के बाद भगवान ने सुन ली। Jwala Singh was a local coach who watched Yashasvi play, listened to his story and decided to take him in. Jwala says that he related with Yashasvi's struggle thanks to his own youth. His empathy as well as his stature within Mumbai cricket was the beginning of a new life for Yashasvi.
With food, shelter, and clothing all taken care of, there was finally time for his abilities to come through. Jwala saw an outstanding talent in front of him, although one with a lot of anxiety and lack of confidence because of how his life had been. He set about trying to change this while also making sure Yashasvi had the best quality of training possible. At 12 years old, he thought Yashasvi was ready for the Kanga League, a local tournament that consisted of erstwhile Mumbai Ranji Trophy players. कांगा लीग हमारा होता है मुंबई में, बहुत फेमस टूर्नामेंट है। तो मैंने काफ़ी लोगों से बोला कि यार यशस्वी को कौन से डिवीज़न में खिलाऊं। तो इनफैक्ट मैंने कुछ बड़े क्रिकेटर्स से को बोला, तो लोगों ने बोला इसको भी लोअर डिवीज़न में खिला। लेकिन मैं इसके गेम पे बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने जो मुस्लिम यूनाइटेड जिस टेंट में रहता था उसके कैप्टन से मैंने बात किया और मैं बोला यार इसको तुम ए डिवीज़न खिला सकते हो क्या। तो थोड़ा सा उन्होंने मेरे पे डाउट की नज़र से देखा और बोला कि यार ए डिवीज़न। मैं बोला नहीं, इसको खिलाओ ए डिवीज़न। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, टीम में डाल देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। पहला 3 मैच इसको नहीं खिलाया और वो लोग मैच भी थोड़ा ख़राब खेल रहे थे। तो मैं गया और बोला यार इसको तुम क्यों नहीं खिला रहे हो। तो बोले यार ज्वाला भाई छोटा लड़का है, फास्ट बॉलर्स को खेल नहीं पाएगा। और जो मैंने बॉलिंग मशीन की प्रैक्टिस की बात की तो मैंने उनको बोला कि यार ये लड़का ना 85 माइल्स खेलता है और 85 माइल्स पे फुल शॉट खेलता है, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी शायद वो उनका बॉडी स्पीड इतना अच्छा नहीं है। तो जो लड़का 85 माइल्स पे बॉलिंग मशीन पे खेल सकता हो, कांगा लीग में 115 की स्पीड या 110 की स्पीड से ज़्यादा कोई डालता नहीं है। तो मैं बोला इसको एक बार आप चांस दो, अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो सारा ब्लेम मेरे पे डाल दो। On debut, Yashasvi batted number 8 and made an unbeaten 39 of 137 balls to help his team draw in a game that featured 8 Ranji players, and there was no looking back. In age group cricket, he was scoring centuries and picking up wickets at will. In one junior tournament, he scored 500s in a row and picked up 3 hat-tricks, ending the season with 16 tons in 22 innings. Soon after, at 16 years of age, he got his first call-up to the Indian under-19 team, and this is where IPL scouts had begun to take notice. In 2019, he made a quiet Mumbai Ranji debut and played no further senior-level games outside of a stint with India under-23 in some list A matches. But in December that year, a bidding war between Mumbai Indians and Rajasthan Royals saw him bag a 2.4 crore IPL contract without ever playing a senior T20 game. A month after that, he was player of the series at the Under-19 World Cup in 2020, scoring 400 runs in 6 innings, while his team's next best scorer got 150. Life since then for Yashasvi has been about raising the peak year after year, through double hundreds in list A cricket, getting to 1,000 first-class runs in record time, and having his best ever IPL season this year. For a 21-year-old, Yashasvi has certainly seen more of life than many older people do. We'll be hoping the next fast-forward destination for him is in the Indian senior team.